Class 6 NCERT Solution Chapter B6 SST The Beginnings of Indian Civilization। इसके बिग क्वेश्चन से शुरू करते हैं। व्हाट इज ए सिविलाइजेशन? सभ्यता क्या है? A civilization is a complex society characterized by urban development, social structure, advanced technology, a writing system, and cultural practices. Civilization often have organized governments, trade system, and religious belief. एक सभ्यता के बारे में इसमें बताया गया है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट? जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है उनमें अर्लीस्ट सिविलाइजेशन कौन कौन सी थी? द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज द इंडस वैली सिविलाइजेशन. इट इज ऑल्सो नोन एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो सभ्यता विकसित हुई उसको इंडस सिविलाइजेशन और हड़प्पन सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है. व्हाट वर इट्स मेजर अचीवमेंट? इस सभ्यता के मेजर अचीवमेंट क्या थे? तो द मेजर अचीवमेंट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इंक्लूड वेल प्लान सिटीज लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो. इसमें वेल प्लान थी. एडवांस ड्रेनेज एंड सैनिटेशन सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड system of weight and measures, skill craftsmanship in poetry, jewelry, and metallurgy, active trade with regions like Mesopotamia. Think about it. Which of the above characteristics do you think is the most fundamental? That is characteristics essential to the development of all others. So the most fundamental characteristics essential to the development of all others is productive agriculture. A stable and surplus food supply allows people to settle in one place, leading to the growth of villages and cities. Once basic needs like food are met, societies can focus on other activities such as trade, craft production, and the development of the government, writing, and cultural practice. Without agriculture to sustain a population, it would be difficult to manage or grow a complex civilization. Let us explore for each characteristics in the list above. Can you make a list of professions or occupations that might exist इन सच ए सोसाइटी? इसमें कौन कौन से प्रोफेशंस का बारे में बताया गया है, उसकी विशेषताएं. तो द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, शासन और प्रशासन किस प्रकार से था? किंग्स और रूलर थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स, टैक्स कलेक्टर्स, जजेस, मिलिट्री लीडर्स, ये गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में थे. उसके बाद है अर्बनाइजिंग. अर्बनाइजिंग का मतलब होता है टाउन प्लानिंग, शहरीकरण. वाटर मैनेजमेंट एंड ड्रेनेज सिस्टम किस प्रकार से था? सो टाउन प्लानर्स थे, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, बिल्डर्स एंड मेसन, सैनिटेशन वर्कर. उसके बाद वैरायटी ऑफ क्राफ्ट्स, मैनेजर ऑफ लॉ, मटेरियल एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. सो ब्लैक स्मिथ है, पोटर, ज्वेलर्स, वीवर्स, कारपेंटर्स. फिर ट्रेड, इंटरनल और एक्सटर्नल जो व्यापार था वो, तो उसमें काम करने वाले मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, शिप बिल्डर, कारवान लीडर, जो कारवा चलते थे ट्रेडर्स के. अकाउंट्स से संबंधित थे तो अकाउंट सम ऑफ फॉर्म ऑफ राइटिंग, तो स्क्राइब्स, स्कॉलर्स, रिकॉर्ड कीपर, प्रीस्ट, टीचर, ये इनमें शामिल थे. उसके बाद कल्चरल एक्सप्रेशंस, आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, ओरल ट्रेडिशंस, सोशल कस्टम्स, ये थे. तो इसमें ये आर्टिस्ट थे, स्कल्पचर, पोइट्स एंड राइटर्स, म्यूजिशियन, डांसर्स एंड स्टोरी टेलर्स, ये थे. उसके बाद प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर, इसमें फार्मर्स, इरिगेशन स्पेशलिस्ट, एनिमल हेडर्स, टूल मेकर्स, ग्रेन स्टोरेज मैनेजर्स, ये थे. उसके बाद ये मैप दिखाया गया है इंडिया का. सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ दिस सिविलाइजेशन आर मार्क्ड ऑन द मैप. फिगर 6.3 में एज ए क्लास एक्टिविटी कैन यू ट्राई टू मैच दीज सिटीज विद द मॉडर्न स्टेट्स और रीजन इन द टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज. तो इसमें हड़प्पन जो सिटी है, हड़प्पन सभ्यता, हड़प्पन सिटी है, मॉडर्न स्टेट. हड़प्पन सिटीज कौन कौन से वो मॉडर्न स्टेट है इनमें? सबसे पहले धोलावीरा. इसमें धोलावीरा है वो पंजाब क्षेत्र का है धोलावीरा. उसके बाद है हड़प्पन सभ्यता, ये है गुजरात में. कालीबंगा सिंध में. अच्छा, इनको मैच कराना है. मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, ये राजस्थान, ये इनको मैच कराना सही. तो हड़प्पन सभ्यता और मॉडर्न स्टेट है इनके. धोलावीरा, ये धोलावीरा गुजरात में. तो धोलावीरा ये रहा गुजरात क्षेत्र. इसमें ऊपरी धोलावीरा ये गुजरात में है. उसके बाद है हड़प्पा, पंजाब पाकिस्तान में. हड़प्पन सभ्यता ये वाला पार्ट है, ये हड़प्पन सभ्यता का सिंध पाकिस्तान में है. उसके बाद पंजाब पाकिस्तान में. कालीबंगा राजस्थान में है. मोहनजोदड़ो ये सिंध पाकिस्तान में है. राखीगढ़ी हरियाणा, राखीगढ़ी, बनवाली और बिराना, फरमाना, ये हरियाणा में है. ओके, नेक्स्ट है यू
may have come across the term Indus Valley Civilization and noticed that we have not used it. A look at the map, figure 6.3 and page number 89 explains why the term valley is absolute. As we now know that the civilization extended much beyond the Indus region. तो क्या मतलब है कि मतलब इंडस वैली इसको कहना कहाँ तक उचित है? तो ये द टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज यूज्ड बिकॉज पीपल फर्स्ट थॉट दैट दिस सिविलाइजेशन वाज ओनली अराउंड द इंडस रिवर. क्योंकि शुरू में तो ये था कि इंडस वैली उसके आसपास क्षेत्र में इसका डेवलपमेंट हुआ. बट नाउ आफ्टर लुकिंग एट मैप, जब हम मैप को देखते हैं और जब बहुत सारी सिविलाइजेशन अन्य क्षेत्रों में भी डेवलप हुई, वी नो दैट द सिविलाइजेशन स्प्रेड फार बियॉन्ड द इंडस रीजन, reaching parts of India, Pakistan, Afghanistan. It also included area around the Ghaggar Hakra, जो पाकिस्तान रिवर, सरस्वती रिवर जो पहले थी. Because it covered such a large area, the term valley doesn't fully describes the civilization anymore, which is why we no longer use it. तो अब हम इसको इंडस सिविलाइजेशन नहीं कहते इस वजह से. फिर हम देखते हैं फिगर, लुकिंग एट दिस 3 हड़प्पन सील्स. ये हड़प्पन सभ्यता में जो प्राप्त हुई सील्स मोहरे हैं, विद सम राइटिंग साइन इनके ऊपर लिखे हुए हैं, जिनको अभी तक कुछ को पढ़ा भी नहीं गया है. What goes through your mind? Would you like to suggest any interpretation? Let's imagination run. तो हम देखते हैं, looking at these 3 Harappan seals, several thought and interpretations come to mind. The presence of animals such as the unicorn, bull, and horned tiger may suggest that these creatures had special significance in the Harappan culture. क्योंकि इन सभ्यताओं में इनका महत्व था, इन पशुओं का. Possibly representing power, protection, and religious belief. The symbols around the animals could indicate a form of early writing or a system of communication that is yet to be fully deciphered. These seals might have been used for trade, ownership, or religious rituals. Question, activities, and projects. Question 1. Why does the civilization studied in this chapter have several names? Discuss their significance. कि इस सभ्यताओं में बहुत सारे नाम हैं, वो इनमें मिलते हैं, तो उनके ऊपर आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं. तो the civilization studied in this chapter is often called the Indus civilization, Indus Valley civilization, हड़प्पन civilization और Indus सरस्वती civilization. ये अलग अलग नाम है. These names reflect different aspects of the civilization's location and discoveries. It is called the Indus Valley civilization. सबसे पहले बात करते हैं कि इसको Indus Valley civilization क्यों कहते हैं. It was first discovered near the Indus River, क्योंकि सबसे पहले इसको Indus River के नजदीक इसमें डिस्कवर किया गया था. The term हड़प्पन civilization is used because हड़प्पा was one of the first cities excavated. सबसे पहले उत्खनन इसका हड़प्पा जगह पे किया गया था, इसलिए इसको हड़प्पन civilization कहा गया. The name Indus Saraswati civilization recognizes that the civilization extend beyond the Indus River to near areas near the Ghaggar Hakra River beyond to be the Saraswati River. क्योंकि इसका जो क्षेत्र था, वो जो विस्तार था, वो इंडस सरस्वती जो नदी थी, जिसे वर्तमान समय में घग्गर और हकरा, जो पाकिस्तान में हकरा नदी कहते हैं, घग्गर कोई, तो इनके नजदीक था, इसलिए इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं. Write a brief report 150 to 200 words summing up some of the achievements of the Indus Saraswati civilization. The Indus Saraswati civilization, also known as the Harappan civilization, क्यों कहा जाता है, आप हमने पढ़ लिया. Made remarkable achievement in urban planning. तो बहुत ही urban planning, trade, craftsmanship. One of the most notable aspect was their well planned cities. सबसे महत्वपूर्ण जो इस civilization की बात करते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण बात ये थी कि well planned city थे इसके अंदर, with advanced drainage system, grid like street and uniform building structure. This reflects a high level of engineering and administrative skill. The use of backed brick for construction, पक्की ईंटों का काम में लिया गया था. Even for large structure like granaries and citadels showcases their architectural expertise. Trade was another major achievement, as the civilization had a vast trade network that extended to regions like Mesopotamia. सील भी मिली यहाँ पे. वेट तोलने की जो वेट वजन and measures used in trade indicate that the Harappan had a standardized system of transactions. Additionally, their craftsmanship in making pottery, jewelry, and tool from materials like bronze and stone shows a deep understanding of metalworking and artistry. The Harappans also developed a unique script, though it remains undeciphered. This script, along with their religious figurines, suggest a complex social and cultural system. Imagine you have to travel from the city of Harappan or Kalibanga. What are your different opinion? Can you make a rough estimation of the amount of time each option might take? If traveling from Harappan to Kalibanga during the Indus Saraswati period, different option might be available. कौन कौन से ऑप्शन थे कि यदि हम हड़प्पन से कालीबंगा की तरफ यात्रा करें तो बाय फुट. पहला, ट्रेवलिंग बाय फुट वुड लाइकली बी द स्लोवेस्ट ऑप्शन, क्योंकि धीरे धीरे चला जाता ऑन बाय फुट. कंसीडरिंग द डिस्टेंस ऑफ अराउंड 400 to 450 किलोमीटर बिटवीन हड़प्पन एंड कालीबंगन, on foot people could
cover approximately 15 to 20 kilometers per day. Therefore, the journey might take about 20 to 30 days. दूसरा है by cart, बैलगाड़ियों से या bullock cart. The journey could be faster, perhaps covering 30 to 40 kilometers per day. And with this option, the trip might take around 10 to 15 days. By river, नदी के through. If river were navigable, this would be the quickest option. If boats or rafts were available for travel along the Saraswati or Indus river system, the journey could be shortened significantly, possibly taking around 5 to 7 days, and depending on the current and the boat system. Question 4. इसमें let us imagine a Harappan man or women being transported to an average kitchen in today's India. What are the 4 or 5 biggest surprising awaiting them? पहला, electric appliances, जो विद्युत उपकरण है. The presence of electric stove, refrigerator and microwaves would be a huge surprise for them. The ability to cook and store food using electricity would be completely new to them. Running water and plumbing. While Harappan had advanced water management system, but modern kitchens with tap or instant access to clean water would amaze them. ये उनके लिए आश्चर्य की बात हो. Gas stove. Cooking uses gas burners and ovens would seem like magic to them, as they were used to fire-based cooking methods. Ready-made spices and packaged food. The availability of processed spices and pre-packed food item would be a significant surprising, as they were accustomed to preparing everything from scratches. Metal utensils and cutlery. The variety of stainless steel, aluminium and plastic kitchenware would differ from their earthen and bronze pots, bowl and cooking tools. Looking at all the pictures in this chapter, make a list of the ornaments, gestures, objects that still feel familiar in our 21st century. Ornaments. Bangles, necklaces and earrings made of metal, beads, money and stone are still widely worn today. आज भी पहने जाते हैं शान से. Seal and symbols. Some seals features swastik, सात्य का चिन्ह, which remain a symbol in many Indian cultures today. आज भी वो काम में लिए जाते हैं इस प्रकार के सिंबल. टेराकोटा टॉयज, क्ले whistles, मिट्टी के खिलौने, toys for children, similar to what we see today in rural areas. Gestures. The terracotta figures seated in a namaste postures reflect the same greeting gesture still used in India. Bronze mirrors and potteries. So the use of simple bronze mirrors and terracotta pottery is still visible in modern India, especially in traditional crafts. What mindset does the system of reservoir in Dholavira reflects? The reservoir system at Dholavira reflects the mindset of foresight. Foresight means भविष्य के बारे में सोचना, planning and sustainability स्थायित्व है. It shows that the Harappans understood the importance of water conservation in an arid environment and took measures to ensure a steady water supply throughout the year. This system also indicates a highly organized and civic-minded society that placed great importance on public welfare and resources management. 7. In Mohenjo-daro, about 700 wells, कुएं built with brick have been counted. 700 के लगभग कुएं ईंटों के बने हुए मिले हैं. And they seems to have been regularly maintained and used for several centuries. कई शताब्दियों तक उनको काम में लिया गया था. Discuss the implications. The discovery of about 700 wells in Mohenjo-daro maintained over centuries implies a high level of urban planning and engineering skill also. It suggests that the Harappans prioritized access to clean water not only for daily use but also for public sanitation. The fact that these wells were used for such a long period indicates excellent construction quality and society capability of maintaining infrastructure across generations. This also shows an early understanding of sustainability and public health. 8. Question. It is often said that the Harappan had a high civic sense. Discuss the significance of this statement. And do you agree with it? Compare these with cities in large cities in India today. Yes. The Harappans demonstrated a high civic sense as evidenced by their well-planned cities with advanced drainage system, public bath, बड़े-बड़े public bath मिले, and well-maintained street. These figures reflect a society that values hygiene, public welfare, and orderly living. The layout of these cities shows a concern for common good and efficient administration. In comparison, modern cities in India often face challenges related to waste management, public sanitation, and infrastructure maintenance. Though many advancements have been made, however, the Harappan sense of communal responsibilities for maintaining cleanliness and order stand out as a remarkable feature, which could still serve as an example for contemporary civic planning and responsibility.
Okay, thank you.